Good morning, all of you, and welcome to our GYANJYOTI online classes. And dear student, today we will discuss the exercise of chapter number that is 12, adrift at sea. Okay, adrift at sea. So let's go to our topic and kindly open your book, page number 125. Here are some questions related to the topic, and we have to find out the answers. Okay, we have to write down the answers of these questions. Okay, so first question is question of comprehension section is the fill in the blanks section, that is the question answer section. Okay, so first question here is, this is a tale that takes place at the dash. Okay, this is a tale. Tale means what? Story. Okay, so this is a tale that takes place at the Pacific Ocean. Okay, Pacific Ocean. Okay, this is a story which happened in Pacific Ocean. Richard Parker was a dash. Okay, Richard Parker was a Bengal tiger. Richard Parker was a Bengal tiger. Okay. Number 3. Richard Parker looked small and dashed to the narrator when he was drowning. Richard Parker looked small and helpless when to the narrator when he was drowning. Drowning means जब वो डूब रहा था. Okay. So he was feeling very helpless when he was submerged in water. When he was about to submerge, dipping in water. Okay. So he was to the narrator. He looked very small and helpless. Number 4, the narrator took the dash and threw it in Richard Parker's direction. The narrator took the life buoy. Okay, the life buoy. Okay, took the life buoy and threw it in Richard Parker's direction. So life buoy is a kind of equipment through which one can be saved from the drowning. Okay, so the people, the NDRF team, okay, they usually have that life buoy support, or each and every boat has life buoy. Okay, and by the help of that life buoy, one can rescue a person who is drowning. Okay. Number 5, the narrator grabbed and dashed and thrust it at Richard Parker. The narrator grabbed and what? Oar. Okay, the narrator grabbed an oar and thrust it at Richard Parker. Richard Parker rose dashed on the tarpaulin. Okay, Richard Parker rose unsteadily. Okay, unsteadily to his feet on the tarpaulin. Okay, Richard Parker rose unsteadily to his feet. Okay, unsteadily to his feet on the tarpaulin. Okay, so when he was rescued from drowning, at first he jumped on the boat, and at first what he does, he rose unsteadily in a trembling way. Okay, on the tarpaulin. Tarpaulin के ऊपर क्या है वो unsteadily मतलब ट्रेम्बलिंग हो रहा था, ठीक है ना, मतलब कांप रहा था. कांपते कांपते क्या वो टारपोलिन के ऊपर क्या वो अपने को क्या सुखाने लगता है. ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी क्या है, पानी से पूरा भीग जाए रहता है, इसलिए अपने आप को क्या सुखाने के लिए वो किस पर चढ़ता है? टारपोलिन. ठीक है ना. सो इट इज योर व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, दैट इज ए टू आंसर दिस क्वेश्चंस. ओके. Okay, so first question here for you is, who is Richard Parker? Okay, who is Richard Parker? Richard Parker कौन था? So Richard Parker is a 3-year-old adult Bengal tiger. So who was Richard Parker? Richard Parker is a 3-year-old adult Bengal tiger. Richard Parker कौन था? एक 3 साल का क्या है, छोटा सा Bengal tiger था. Okay. So how does the narrator remember his family members during the time of crisis?
Okay, so how does the narrator remember his family members? When he was caught in the crisis. Okay, when he was caught in the boat. तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो वो किन किन को याद करता है, ठीक ना। नैरेटर अपने फैमिली मेंबर्स को किस तरह से याद करता है, किसको किसको याद करता है, वो लिखना है। सो द नैरेटर सेज, टेल मी आई एम स्टिल हैप्पी मदर माय टेंडर गार्डियन एंजल ऑफ विजडम वेयर आर यू, एंड यू फादर माय लविंग बॉडीगार्ड, एंड यू रवि dazzling hero of my childhood. So he remembered all his family members and also his childhood best friend Ravi. Okay, so where are you? Please come and help us. Okay, so the narrator says, tell me I am still happy mother, my tender guardian angel of wisdom, where are you? And you father, my loving bodyguard, and you Ravi, dazzling hero of my childhood. Okay, so these are the person to whom he called for help during the crisis. ठीक है ना, इनको वो क्या है बुलाता है, वो क्या है अपने मम्मी पापा, अपना जो बेस्ट फ्रेंड कौन रवि, उसको क्या वो याद करता है कि आओ तुम क्या है हमें बचाओ, ठीक ना। तो देखो वो जो शिप में जा रहे थे वो शिप क्या क्रैश हो जाता है, ठीक है ना। और क्रैश होने पर क्या उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहीं पे क्या है ये हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब मर जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर कर जाते हैं। तो वो उनके एंजल्स को, ठीक है ना, उनको क्या है वो बुलाता है कि मम्मी पापा आप कहाँ हो, हमें हेल्प करने आओ। उनके साथ साथ क्या बहुत सारे भगवानों को याद करता है, और गॉड, अल्लाह, जीसस, ओके, ईच एंड एवरीबडी ही कॉल्स आउट फॉर हेल्प। ओके, सभी को याद करता है। सो इन दिस वे द नरेटर रिमेंबर्स ओके हिज फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। ओके, describe Richard Parker's surgery. Was the narrator wounded during the crisis? Okay, was the narrator wounded during the crisis? तो narrator को कहीं भी चोट लगा था क्या इस दौरान? Okay, no, the narrator was not wounded during the crisis. So during the crisis he was not wounded. उसको कहीं भी किसी तरह का क्या कोई भी चोट नहीं लगा था, ठीक है ना। उसको क्या है जब मतलब क्रैश हुआ तो बोट में एक क्रू मेंबर था, ओके, वो उसको क्या करता है, उसको दूसरे बोट में क्या है उतर जाने के लिए क्या है कहता है, ठीक ना। और इस तरह से क्या वो सेफ हो जाता है। वो दूसरे बोट में क्या है छोटा सा उनके पास रहता है, छोटा सा बोट, उनमें उसमें क्या वो चढ़ जाता है और क्या सेफ हो जाता है। बाकी जो मेंबर्स थे, द मेंबर्स दोज वर प्रेजेंट इन द शिप, दे वर ड्राउन्ड इन द वाटर, ओके, इन द स्टॉर्म। ओके, सो द नरेटर वाज नॉट wounded एट ऑल ड्यूरिंग द क्राइसिस। Okay. Okay. So question number 4. Describe Richard Parker's reaction on seeing the lifebuoy. So how Richard Parker reacted on seeing the lifeboat? Okay. So the sight of the lifebuoy flying his way gave Richard Parker hope. He revived and started beating the water with vigorous, desperate strokes. Okay. The sight of the lifebuoy flying his way gave Richard Parker hope. Okay, so when the narrator threw the lifebuoy towards Richard Parker, that lifebuoy gave some hope to the Richard Parker that I would be safe from drowning. Okay, see, he got a hope. Okay, that I will be safe by now. Okay. He revived and started beating the water with vigorous, desperate strokes. Okay, so in order to reach the lifebuoy, he started beating the water with desperate strokes. Okay, started beating the water, और जल्दी से क्या वो लाइफबॉय के पास क्या है आना चाहता था। तो पहले जैसे ही मतलब वो दिखता है कि लाइफबॉय, ठीक ना, लाइफबॉय उसकी ओर फेंका जा रहा है, तो लाइफबॉय को देख कर क्या है उसको उसके अंदर एक होप आता है, ठीक है ना, विश्वास हो जाता है कि क्या है मैं ये जो पानी है इससे क्या मैं बच सकता हूँ, ठीक है ना, मैं डूब नहीं सकता, ये लाइफबॉय की मदद से क्या है मैं अपने आप को क्या है बचा सकता हूँ। और इस वजह से क्या है वो जल्दी जल्दी में क्या है तैरने लगता है, ठीक है ना, और स्ट्रोक्स मारने लगता है, और क्या है वो जल्दी से ही लाइफबॉय के पास आना चाहता था। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द नरेटर सडनली चेंज्ड हिज माइंड विथ रिगार्ड टू रिचर्ड पार्कर कमिंग ऑन द लाइफ बोट?
why do you think the narrator suddenly changed his life? So at first when at first he saw he saw that something is drowning in the water. So at first he thought that it might be some person who is drowning. So at first he wanted to help the drowning living creatures. Okay, but when he saw that the living creature is a Bengal tiger, okay, so he thought not to help him. But yet when they were stuck in the same situation, okay, so he thought to save him. Okay, the narrator changed his mind suddenly because he felt compassionate about Richard Parker. He realized that they both were stuck in the same situation and therefore he saved his life. So at first the narrator didn't want to save him, save Richard Parker, because he was he was an animal. Okay, there's a Bengal tiger, okay, who can eat anything. Okay, he is a carnivorous animals. So he thought that if I help him, then he would definitely kill me. So at first he thought not to help him, but after some while he realized that they both were stuck in the same situation. Okay, so he thought to help him. Okay, so that is why he changed his mind and helped him. He realized that they both were stuck in the same situation and therefore he saved his life. और इस वजह से क्या है, वो उसको पता था कि हम दोनों क्या है एक ही सिचुएशन में क्या फंसे हुए हैं. इस वजह से क्या है वो उसकी क्या है मदद करता है. किसका? रिचर्ड पार्कर का. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नैरेटर चूज टू डू इन द एंड. ओके, और लास्ट में नैरेटर क्या करता है. ओके ओके, सो व्हाट डिड द नैरेटर चूज टू डू इन द एंड. एंड में नैरेटर क्या करता है? द नैरेटर थ्रू हिमसेल्फ ओवरबोर्ड. ओके, सो इन द एंड द नैरेटर थ्रू himself on the overboard. So why did he do so? Okay, so as we know that the animals are carnivores. Okay, sorry, the Richard Parker, which is a Bengal tiger, is is a carnivore. Okay, so he was very hungry and tired. Okay, so when he jumped to the overboard, or when the narrator helped him and helped him to come over the boat, he was very hungry and he wanted to kill narrator. So that is why the narrator threw himself to the overboard. ठीक है, तो narrator लास्ट में क्या करता है? अब देखो, जो टाइगर्स हैं वो क्या है, आदमखोर होते हैं. ठीक है ना, कार्निवोर्स होते हैं. कोई भी एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स, किसी को भी वो खा सकते हैं. तो जो टाइगर था वो बहुत समय से क्या है तैर रहा था, टायर्ड हो चुका था और क्या है भूख भी उसको लग रहा था, क्योंकि कई घंटों से क्या वो तैर रहा था. तो जैसे वो बोर्ड के ऊपर आता है तो नरेटर को देखता है और क्या है उसकी और क्या झपटने की क्या है या उसको क्या मारने की कोशिश करता है. ठीक है ना, तो इस वजह से जो नरेटर है वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या है बोर्ड से क्या है कूद पड़ते हैं. ठीक है ना, ओवर बोर्ड साइड में क्या है उसके नीचे ही जो शिप था, ठीक है बोर्ड था, सॉरी बोर्ड था, उसके नीचे ही एक छोटा सा क्या है ओवर बोर्ड था, वहाँ पर क्या वो कूद पड़ते हैं. ठीक ना, जहाँ की वो टाइगर नहीं जा सकता था, और इस तरह क्या वो अपने आप को क्या है बचाते हैं. ओके, देन कम टू डिस्क्रिप्शन सेक्शंस. सो रीड दिस लाइन्स अबाउट द नैरेटर. समथिंग इन मी डिड नॉट वांट टू गिव अप ऑन लाइफ, वाज अनविलिंग टू लेट गो, वांटेड टू फाइट टू द वेरी एंड. लेट गो ऑफ दैट लाइफ बॉय. रिचर्ड पार्कर, लेट गो. आई सेड, आई डोंट वांट यू हियर, डू यू अंडरस्टैंड? Go somewhere else, leave me alone, get lost, drown. So based on this two context extract about the narrator, write a characteristic sketch on him. Okay, so describe the speaker's question number 2 is describe the speaker's situation in your own words. What do you think would have happened next? Okay, so it is a small extract that the speaker was first of all at first wanted to help Richard Parker. That shows that he was very helpful. Okay, he was very helpful in nature. Okay, and in the second question that describes the speaker situation in your own words. So in this extract, okay, he doesn't want to give up his life. Okay, he doesn't want to give up his life. He wanted to fight till the end. Okay, he want to get out of the
crisis, get out of the sea, okay, ocean. तो वो क्या है, अपने आप को क्या है बचाना चाहता था ओशन से, जैसे तैसे करके क्या है निकलना चाहता था। वो लास्ट तक क्या है फाइट करना चाहता था, ठीक है ना। वो लास्ट तक क्या है, लास्ट मोमेंट तक वो चाहता था कि मैं क्या है इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। ओके, सो दिस शोज दैट ही वॉज वेरी व्हाट ब्रेव, ठीक है ना, वो ब्रेव भी थे। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन नेक्स्ट? ओके, सो हियर द नैरेटर and the tiger both were stuck in a same situation. They both stuck there, okay, and both wanted to get out of that water, okay, get out of that pool, get out of that what come out of that what the sea, or okay, or ocean. So what do you think would happen next? So when the narrator had the tiger, okay, so that tiger was hungry and he wanted to kill him, okay, he wanted to kill him. So when seeing that on seeing narrator to the tiger, okay, he doesn't want to help him at first, okay, on seeing him. So that is why he wanted to, he doesn't want to help him, but he thought a while that they both were stuck in the same situation, okay, so he wanted to was ready to help him and also help the tiger. But what the tiger did, he wanted to kill him because he was hungry, okay. So that is the reason that the narrator he threw himself upon the overboard and helped himself, okay, and he was rescued from the tiger but not from the ocean. So let's come to vocabulary section, okay, let's come to vocabulary section. Then read this sentence from the story, okay. It made a sound like monstrous metallic burp, okay. Both the highlighted words are adjectives and their nouns forms are monster and metal respectively, okay. So both the words are, that is monstrous, metallic, both are what adjective words, while their noun forms are monstrous and monster, and metallic, metal is what the noun forms are monster and metal respectively. So we can make adjectives from nouns by adding suitable suffixes, okay, and we can make adjectives from nouns by adding some suffixes or prefixes, okay. So here is some question that take the correct adjectives from made from these nouns, okay. So here are some nouns are there, okay. Here are some nouns here are some words are there, okay. So we have to take out the correct adjectives, okay, we have to take out the correct adjectives. So first one is what, envy, okay. So let's move forward further to the vocabulary section. So B1, take the correct adjectives made from these nouns, okay, we have to take out the correct adjectives. So number one is what, adjective, sorry, number one is envy, okay, number one is what, envy. So what is the correct adjectives of what, envy? Is your what, envious, envious, okay. So take the word what, envious, okay, take the word envious. Number two is beauty, okay, beauty, it is a word, abstract noun, okay, beauty. So beauty, what is the adjectives for beauty? Beauty is beautiful, okay, beautiful. Of let it, I am rejecting all the questions. There are some questions like envy, envious, envied. So take out the correct adjectives for the noun envy. The correct one is envious. For beauty, beautifully, beautifully and beautiful. So the correct adjective for beauty is beautiful, okay. Number three, response, okay, number three, response, respond and responsible,
correct adjective for response is what? Response. Number 4, would. Okay, would becomes what? Wooden, then woods. So the correct adjective for wood is wooden. So in this way you have to take the correct one. Okay, so let's do the next one. Number 5, glory. Okay, glory, glorify and glorious. So correct one is glorious. Okay, I'm writing here the next question, number 6, that is magnet. Okay, magnetism and what? Magnetic. So the correct adjective for noun magnet is magnetic. तो यहाँ पे हमको क्या है, नाउन्स के करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म्स को क्या है, टेक आउट करना है. तो एनवी का क्या होगा? एनवियस, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्ड, वुड का वुडन, ग्लोरी का ग्लोरियस और मैग्नेट का मैग्नेट. तो ये जो टिक आउट वर्ड्स हैं ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. गेट इट? सो लेट्स मूव टू B2. ओके, दैट मेक सेंटेंसेस विद द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस. ओके, तो इन क्वेश्चंस को लेकर हमको क्या है, कुछ सेंटेंसेस बनाना है. ओके ओके, सो फ्रॉम द वर्ड्स, ओके, वी हैव मेड द सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज एनवियस. ओके, सो द करेक्ट वर्ड फ्रॉम एनवी. ठीक है ना? एनवी का करेक्ट वर्ड किसको हमने किया था? एनवियस को किया था. एनवियस से क्या है, हमने एक सेंटेंस बनाया. ठीक है ना? ब्यूटी का ब्यूटीफुल किया था, तो ब्यूटीफुल से एक वर्ड सेंटेंस बनाया. रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्ड किया था, तो उससे क्या है, बनाया. ओके, फोर क्या है? वुड. वुड से क्या है? वुडन. और क्या है? ग्लोरी से क्या है? ग्लोरियस. और मैग्नेट से क्या है? मैग्नेटिक. हमने क्या है, वर्ड्स बनाया. ठीक है ना? सॉरी टू से दैट. तो रेस्पॉन्स का जो है ना, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में B1 में रेस्पॉन्स का जो हमने क्या रेस्पॉन्ड किया था उसको रेस्पॉन्सिबल करो. ठीक है ना? रेस्पॉन्ड नहीं, वो रेस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर B1 का देखो. ठीक है ना? B1 में क्या दिया है? नंबर 3. ठीक है ना? B1 का नंबर 3 में रेस्पॉन्ड दिया है. ठीक है ना? इसका दिया है फिर रेस्पॉन्ड और क्या है? रेस्पॉन्सिबल. ठीक है? तो B1 का देखो, B1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो. यहाँ पे टिक का करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम मेड फ्रॉम दिस नाउन्स है. वहाँ पे रेस्पॉन्स दिया है, तो रेस्पॉन्स का क्या करोगे? रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्ड ना करके रेस्पॉन्सिबल को टिक करोगे. ठीक है? रेस्पॉन्ड का जो एडजेक्टिव है वो कौन सा होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है? So first sentence is one should never be envious of others. Okay. Second, the beautiful house caught my attention. Number 3, he was a responsible person. Number 4, the wooden furniture in our house has to be sold. Number 5, what a glorious wind. Number 6, the show was magnetic. It held our interest for a very long time. Okay. So in this way we make sentences from the words, from the ticked words, the previous questions. That is question number what? B1. Okay, so tick the correct adjectives. तो टिक हमने जो adjectives टिक किए थे, पहला कौन सा था? envious था. सेकंड ब्यूटीफुल. थर्ड का अभी मैंने क्या बताया? रेस्पॉन्सिबल. तो रेस्पॉन्ड को जो टिक किए हो, ठीक है ना, रेस्पॉन्ड को जो टिक किए हो क्या है? क्रॉस करो, ये नहीं होगा. ठीक है? रेस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है? नंबर 4 का होगा तुम्हारा वुडन, ग्लोरी का होगा ग्लोरियस और मैग्नेट का होगा मैग्नेटिक. ओके, सो लेट्स कम टू B3. B3, वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो. यहाँ पे कुछ टेबल दिया है, एक तरफ नाउन्स लिखना है और दूसरी तरफ क्या है? एडजेक्टिव्स लिखना है. तो जहाँ पर नाउन दिया है तो उसका एडजेक्टिव लिखना है और जहाँ पर एडजेक्टिव दिया है तो वहाँ पर नाउन लिखना है. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, सो सी द नाउन सेक्शन. Okay,
नाउन सेक्शन में देखो यहाँ पर लिखा है नंबर 1 इज व्हाट, रस्ट. नंबर 1 rust, rust, rust. So what will be the adjectives of rust? Rust is rusty. Rust is rusty. Number 2, progress. Number 2 is what? Progress. Okay. So what will be the adjective form of progress? Progressive. Okay. Progressive. Number 3 is dash. Here adjective form is given, that is magnetic. So what is the noun form of magnetic? Magnet. Okay. Noun form of magnetic is magnet. Number 4 is fortune. Number 4 is what? Fortune. So what is the progressive form of fortune? Fortunate. Okay. Fortunate. Number 5 dash. Okay. So its adjective form is given as attractive. Attractive. So what is the noun form of attractive? Attraction. Attraction. Number 6. Number 6 is what? Dash. So its adjective form is sensible. Okay, sensible. So what is the noun form of sensible? Sense. Okay, sense is a type of what? Abstract noun. Number 7, home. Okay, so what is the adjective form of home? Homely. Number 8. Here is given the adjective form, that is foggy. What is the noun form of foggy? It's fog. ठीक है ना. तो यहाँ पे नाउन फॉर्म है और क्या है? एडजेक्टिव्स है. तो जहाँ पर नाउन्स दिया है, एडजेक्टिव्स का नहीं दिया है, तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा. और कहीं पे क्या एडजेक्टिव्स का दिया है तो नाउन का ब्लैंक छोड़ा है. ठीक है ना. तो वहाँ पर हमको क्या है? नाउन लिखना है. सो द नाउन फॉर्म रस्ट becomes rusty, progress becomes progressive, magnet becomes magnetic, fortune becomes fortunate, attraction becomes attractive, sense becomes sensible, home becomes homely, and foggy. Okay, so come to the grammar section. There, C1, fill in the blanks with present perfect form of the verbs indicated in the brackets. Okay, so see the grammar section, that is C1. Okay, C1 is what? Fill in the blanks with present perfect form. तो यहाँ पर present perfect form लगाकर हमको क्या है? fill up करना है किसको? blanks को. ठीक है ना. ब्रैकेट में क्या है? verbs दिए हुए हैं, वही verbs को लगाकर क्या है? हमको present perfect tense क्या है? बनाना है. Okay, so what is the rule of present perfect tense? The rules for present perfect is has or have plus what? Past participle of the verb. Okay, so I have discussed in the grammar section, okay, about the present perfect tense, about the rules, all the rules of the present, past and future tense. So go through that rules and see that what is the rule for the present perfect tense. Present perfect tense का कौन सा रूल हमको फॉलो करना है? has और have plus past participle, मतलब verb का थर्ड फॉर्म क्या है? यूज करना है. ठीक है. तो पहला वाला क्या है? रॉकी डैश ऑल द पेस्टिस. ओके, रॉकी डैश ऑल द पेस्टिस, ब्रैकेट में क्या दिया है? 8 दिया है. ठीक है ना. रॉकी डैश ऑल द पेस्टिस, ब्रैकेट में 8 दिया है. तो क्या होगा? 8 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इटन होगा. और उसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा? हैज और हैव. ओके, हैज और हैव. तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है, वहाँ पे हैज लगता है. बाकी जो रहते हैं वहाँ पे क्या है? हैव लगता है. ओके, सो रॉकी व्हाट हैज ईटन, पास्ट फॉर्म. ओके, सो द थर्ड फॉर्म इट इज ईटन. थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? ईटन हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज रॉकी हैज ईटन ऑल द पेस्टिस. नंबर 2, दे डैश फॉर ए मीटिंग, ब्रैकेट में बोल दिया है.
the dash for meeting, they have gone. So the verb third form of go becomes gone. Okay, go went, gone. Number 3, I dashed Diana for almost 10 years. नो ब्रैकेट में नो दिया है तो क्या होगा, आई हैव नोन. ओके, आई हैव नोन डायना फॉर ऑलमोस्ट 10 years. Number 4. Okay, number 4 finish. Okay, number 4 there is finished in the bracket, written finish. Okay, but there are two dash you dash the work given to you, dash you dash the work given to you. Have you finished the work given to you. Number 5, she dashed that book many times before. Okay, in option is given or bracket is given to read. So she has read that book many times before. Number 6, can you help me please? I dash my house is. Here lose, L-O-S-E, lose. The bracket written lose. So what will be the present perfect tense of lose? Can you help me please? I have lost my house is. ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव यूज करके पास्ट पार्टिसिपल्स मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, रूल्स का है. ठीक है ना, जैसा कि रूल से हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स, वो रूल्स हमको फॉलो करके क्या है इसको पुट करना है. तो इट का पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटन, गो का गॉन, नो का नॉन. ओके, फिनिश, रीड रेड, लूज लॉस्ट. Okay, and for first person singular we use has, and for second person we use what, or third person we use what, have. Okay, so I have written Rocky is first person singular, so I have written has, they have. Okay, I have. Okay, we have you finished? Okay, Kirtan she has, and can you help me please? I have. तो I के साथ ठीक है ना, आई वी दे के साथ क्या है, क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा. बाकी रेस्ट ऑफ जो है उनके साथ क्या है, हैज का क्या है यूज होगा. ठीक है ना, आई हैव, वी हैव, दे हैव. आई वी और दे के साथ क्या है, हैव यूज करेंगे, और द रेस्ट ऑफ ऑल ठीक है ना, जो बाकी हैं ही शी इट दे, ये सब के साथ क्या है, हैज का क्या है यूज करेंगे. ओके, देन कम टू C2. ओके, okay, so read the paragraph first in the present perfect tense and then in the past perfect tense. Okay, so before we move to C3, let's see C2 में क्या है, fill in the blanks with past perfect forms of the verbs indicated in the bracket. Okay, fill in the blanks. You have to fill the blanks in the by making the bracket by making the verb there in the bracket in the past form. Okay, past perfect forms. So the mother dash food before her children arrived home from school. The mother had made. Okay, Jonaki looked very tired because she had not slept well last night. The police dashed the culprit before the minister ordered them to do so. The police had caught the culprit before the minister ordered them to do so. Number 4, we dashed our program even before everyone agreed. We had finished our programs even before everyone agreed. Number 5 is she dashed French before she moved to France. She had learned French before she moved to France. Okay, so see the next one, that is C3. Rewrite these paragraphs first in present perfect tense, then after in past perfect tense. तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है वही पैराग्राफ को, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में वही पैराग्राफ को दोबारा लिखना है. ओके, बाय चेंजिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स. ओके, तो हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं या रेड कलर में उनको ही चेंज करके हमको पैराग्राफ को
लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है, टेक्स है, ठीक है ना, हाईलाइटेड वर्ड टेक्स है, तो उसका जो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होगा हैज टेकन। सो व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेक्स, वुड बी टेकन, हैज टेकन, अरेंजेस becomes has arranged, keeps has kept, makes has made, puts has put, hopes has hoped, has enjoyed, has entertained, has fed, have liked. So by changing the highlighted words, okay, these are all what highlighted words. By changing the highlighted words to a present perfect tense, we have to we have to write a new paragraph. Okay, then come to past perfect tense. Okay, तो यही जो highlighted words हैं उसको क्या है चेंज करके, किसमें चेंज करके, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करके क्या है नया पैराग्राफ एक क्या है लिखना है। ओके, लेट्स डू। ओके, सो रीड दिस पैराग्राफ फर्स्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा लिखना है मैंने बता दिया, ठीक है ना। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ वी हैव टू राइट द सेम, ओके, द सेम पैराग्राफ बाय चेंजिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। Okay, text become had taken, it is the past perfect form. Okay, it is a what, past perfect tense. Okay, past perfect form of text becomes had taken, arranges had arranged, had kept, had made, had put, had hoped, had enjoyed, had entertained, had fed, and had liked. So in this way we can convert these highlighted words into past perfect tense, and we have to rewrite that paragraphs once again in the past perfect tense, ठीक है ना। वो पैराग्राफ को फिर से क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पैराग्राफ तो नहीं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करके क्या है पैराग्राफ को फिर से क्या है लिखना है। गेट इट? देन कम टू व्हाट द लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन, दैट इज लिसन टू द टेक्स्ट एंड मार्क दिस स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स क्या है हमको जो है मार्क करना है। ओके, तो आई एम रीडिंग नाउ। पहला एक है E1। So first question is, the girl you heard about is Malini. The girl you heard about is Malini. First one is what? False. Okay. Number 2, she loves to talk to her friends. It is also one false. Number 3, she had gone for trekking in Shimla. It is also false. It meant that she had gone to somewhere else before. So she had taken a wrong path while trekking. True. The participants were not allowed to take a rocky path at night. Right? False. The girl was not afraid initially when she was lost. 6. True. 7. She was left with enough supplies to last her 2 days. False. Number 8 is, she was finally rescued by her camp leader. True. Okay, so you find some some statements that it is a statement regarding the trekking camp. Okay, so it might be that Malini had got stuck somewhere else. Okay, the first one is the girl you heard about is Malini. Okay, the girl you heard about is Malini. The first statement is false. That means the name of the girl is not Malini, it might be someone else. She loves to talk to her friends. The second statement is also false. It means he was not talkative. He was not a talkative girl. Okay, he was a silent girl. She had gone for trekking in Shimla. Okay, the third statement is also false. It means he had not gone to Shimla. She had gone to other trekking site. Okay, she had taken a wrong path while trekking. So this statement is correct. It is fourth. Okay, so at the time of trekking he lost his path and he took the wrong path. The participants are not allowed to take rocky path at night. This statement is false. Okay, so the participants are allowed to take a rocky path at night also. Number 6, the girl was not afraid initially when she was lost. Okay, so the sixth statement is what? True. Okay, the sixth statement was true. So when he lost his path, he was not afraid. Okay, he was not at all afraid. Number 7, she was left with enough supplies to last her 2 days. So the statement is false because she had finished all his supplies.
उसका खाना पीना सब क्या खत्म हो चुका था ट्रेकिंग में। लास्ट 2 दिन से क्या है वो चल रही है, अपना पाथ क्या भूल गई थी, इधर उधर चलने की वजह से उसको भूख भी लगा और उसने अपना जो सारा खाना है उसको क्या वो खा चुकी थी, मतलब उसके पास और कुछ भी नहीं था खाने को। नंबर 8 शी वॉज फाइनली रेस्क्यूड बाय हर कैंप लीडर, और फाइनली क्या उसको रेस्क्यू कर लिया गया किनके द्वारा, उनके लीडर के द्वारा, कैंप लीडर के द्वारा। ओके, सो द लास्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर व्हाट टॉपिक, दैट इज chapter number 12, Adrift at Sea. So hope you have understood it properly. Okay, and thank you and have a nice day.